In the golden dunes beyond the city of Zerishan, where the wind carved ancient secrets into the sand, there existed a caravan that traveled only beneath the light of the crescent moon. Zershan के शहर से आगे सुनहरी रियत के ठेलों में, जहां हवा रियत में कदीम राज तराशती थी, एक काफिला था जो सिर्फ हिलाल की रोशनी में सफर करता था. It was called the Caravan of Crimson Winds, a procession of veiled riders, crimson banners, and camel-borne treasures that shimmered like stars under starlit skies. इसे सुर्ख हवाओं का काफिला कहा जाता था. नकाब पूश सवारों, सुर्ख झंडों और ऊंटों पर लदे खजीनों का जुलूस जो तारों भरी रातों में सितारों की तरह चमकता था. Legends whispered that the caravan was led by a woman named Safira, whose eyes held the sorrow of centuries and whose voice could tame the desert itself. दास्तानों में सरगोशी की जाती थी कि इस काफिले की क़यादत सफ़ीरा नामी औरत करती थी, जिसकी आंखों में सदियों का गम छुपा था और जिसकी आवाज़ सहरा को भी मतीय कर सकती थी. She was neither queen nor slave, but something far older, a keeper of debts never paid and promises never broken. वो ना मिल्का थी, ना गुलाम, बल्कि कुछ और ही थी. ऐसी मुहाफिज जो इन कर्जों को संभालती थी जो कभी अदा ना हुए और इन वादों को जो कभी तोड़े न गए. One twilight, a young scribe named Naim, weary of ink-stained parchment and courtly lies, overheard a drunken merchant mumble about the caravan passing through the Valley of Salt within 3 nights. एक शाम नाइम नामी एक नौजवान कातिब जो सियाही से भरे कागजों और दरबारी झूठों से थक चुका था, ने एक नशे में धत ताजर को सरगोशी करते सुना कि ये काफिला 3 रातों में नमक की वादी से गुजरेगा. Naim, longing for meaning and danger, packed his scrolls, tied his fate to the wind and set off toward the valley. Naim, जो मानी और खतरे की तलाश में था, अपने तूमार बांधकर अपनी तकदीर को हुआ के हवाले करता हुआ वादी की तरफ रवाना हो गया. The journey was perilous. ये सफ़र नहायत खतरनाक था. He crossed cracked earth that bled fire at dusk, wandered through abandoned temples where shadows murmured forgotten prayers, and fought sleep beneath a sky of blistering stars. इसने ऐसी ज़मीन अबूर की जो शाम के वक्त आग अगलती थी, वीरान मंदिरों में घूमा जहाँ साइभूली बसरी दुआएं बड़बड़ाते थे और झलसती रातों के नीचे नींद से लड़ता रहा. But when the 3rd night arrived, and the moon hung like a sliver of glass, he saw them. Riders cloaked in scarlet silk, camels draped in rubies, drums echoing the rhythm of vanished civilizations. लेकिन जब तीसरी रात आई और चांद शीशे की पतली कुतरे की मानंद आवीज़ां था, उसने उन्हें देखा. सुर्ख रेशम में लिपटे सवार, याकूतों से सजे ऊंट और तबल जो गुमशदा तहजीबों की धन बजाते थे. सफ़ीरा saw him too. सफ़ीरा ने भी इसे देखा. She halted the caravan with a single lifted hand and beckoned Naim forward. इसने एक हाथ बुलंद करके काफिला रोका और नईम को इशारा किया कि आगे आए. Why does ink call to sand, little scribe? She asked. स्याही को रेत की तरफ क्या खींचता है, छूटे कातब? उसने पूछा. Naim bowed, heart pounding, because stories deserve to be written by those who seek them. नाइम ने झुककर कहा, दिल की धड़कन तेज थी क्योंकि कहानियां इन लोगों के हाथों लिखी जानी चाहिए जो इन्हें तलाश करते हैं. She smiled, softly as one does at a child who asks to play with fire. वो मुस्कराई, नरमी से जैसे कोई बच्चे को देखता है जो आग से खेलने की जिद करे. Then come, but know this, the stories we carry are paid with memory, not gold. तो आ जाओ, लेकिन जान लो, हमारी कहानियां सोने से नहीं, याददाश्त से खरीदी जाती हैं. And so began Naim's journey across kingdoms never charted on any map. यूं नाइम का सफ़र शुरू हुआ इन सल्तनतों की तरफ जिन्हें किसी नक्शे पर दर्ज नहीं किया गया था. They passed through the oasis of cracked mirrors, where travelers faced visions of their greatest regrets. वो टूटे हुए आईनों के नखलिस्तान से गुजरे, जहां मुसाफिर अपनी सबसे बड़ी पछतावों का सामना करते थे. They camped beneath the spire of bone, a tower said to be built from the remains of forgotten kings. वो हड्डियों के मीनार के नीचे कैंप लगाते थे. एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहा जाता है
कि इसे भूले हुए बादशाहों की बाकियात से बनाया गया है. In each place, Naim recorded tales that defied belief. A city that floated in the sky but demanded a soul for passage. A well that whispered prophecies in exchange for tears. A lion that spoke only in riddles. हर मकाम पर नाइम ने ऐसी कहानियां लिखें जो यकीन से बाहर थीं. एक शहर जो आसमान में तैरता था, लेकिन इसमें दाखिल होने के लिए एक रूह मांगता था. एक कनवान जो आंसुओं के बदले पेशन गोइयां करता था, और एक शेर जो सिर्फ पहेलियों में बात करता था. But the deeper into the desert they traveled, the more Naim noticed something strange. लेकिन जितना वो सहरा के अंदर गए, नाइम ने इतनी ही अजीब बातें महसूस कीं. Each night, one member of the caravan vanished. First a merchant, then a guard, then a camel. हर रात काफले का एक फर्द गायब हो जाता. पहले एक ताजर, फिर एक महाफिज, फिर एक ऊंट. Safira never spoke of it, and the remaining members never wept. Safira ने कभी इस बारे में कुछ ना कहा, और बाकी लोग कभी नहीं रोए. When Naim asked, she only replied, "Everything has a cost, and some debts are paid in shadows." जब नाइम ने पूछा, इसने बस इतना कहा, हर चीज की कीमत होती है, और कुछ कर्ज साए में अदा किए जाते हैं. On the 21st night, Naim awoke to find his name etched into the sand beside his tent, surrounded by symbols he did not understand. 21वें रात नाइम की आंख खुली तो उसने देखा उसके खीमे के करीब रेत पर उसका नाम लिखा हुआ है, ऐसे निशानात के साथ जिन्हें वो समझ नहीं पाया. He confronted Safira, trembling. Am I next? वो कपकी पाते हुए सफीरा के पास गया. क्या अगला मैं हूं? She nodded solemnly. You asked to follow the story to its end. Most never do. इसने संजीदगी से सर हिलाया. तुमने कहानी के अंजाम तक जाने की ख्वाहिश की थी. ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते. Terrified yet resolute, Naim begged for a way to survive. डर के बावजूद पुरअज़म, नाइम ने बचने का रास्ता मांगा. Safira placed a single scroll in his hands, sealed with black wax and heavier than it should be. Safira ने इसके हाथ में एक तूमार रखा, जो स्याह मोम से बंद था और जितना भारी होना चाहिए था, उससे ज्यादा भारी था. Return to Zarishan. Read this only when you've forgotten what the stars looked like in the desert. ज़िरशां वापस जाओ. इसे सिर्फ तब पढ़ना जब तुम भूल चुके हो कि सहरा में सितारे कैसे दिखाई देते. Then the caravan rode into a crimson wind and disappeared forever. फिर काफिला सरखुआ में घस गया और हमेशा के लिए गायब हो गया. Years passed. Naim became the royal historian of Zarishan, his eyes always distant, his parchments filled with tales the court called myths. साल गुजर गए. नाइम ज़रशां का शाही मोरख बन गया. उसकी आंखें हमेशा दूर देखती रहतीं और इसके कागजात कहानियों से भरे होते जिन्हें दरबार अफसाने कहता. Yet each night he looked toward the dunes, half expecting red silk to ripple across the horizon. लेकिन हर रात वो रेत के टेलों की तरफ देखता, आधी उम्मीद के साथ कि सरख रेशम अफक पर लहरा रहा हो. On his final night, as an old man with trembling fingers, he opened the scroll. अपनी आखिरी रात, जब वो एक बूढ़ा शख्स बन चुका था और इसकी इंगलियां कांप रही थीं, इसने थूमार खोला. Inside, he found not words, but a map inked in silver, showing the path to a place that didn't exist. इसमें अल्फाज नहीं थे, बल्कि चांदी से बनी एक नक्शा थी जो एक ऐसी जगह का रास्ता दिखाती थी जो वजूद ही नहीं रखती थी. A place, the wind still whispered. एक ऐसी जगह जिसका जिक्र हुआ आज भी सरगोशी में करती है. Naim approached cautiously, his heart thundering like the hooves of wild horses. Naim एहतियात से आगे बढ़ा, इसका दिल जंगली घोड़ों के समों की तरह धड़क रहा था. As he drew near, the air changed, thicker, fragrant with myrrh and wind-borne spices. जब वो करीब पहुंचा, तो फजा बदल गई, ज्यादा घनी हो गई, जिसमें मर और हुआ से उड़ती खुशबुओं की महक थी. Safira sat atop a tall black camel adorned with silver tassels and blue beads that glinted like tears. Safira एक लंबे सियाह ऊंट पर बैठी थी, जो चांदी की झालर और नीले मोतियों से सजा हुआ था, जो आंसुओं की मानन चमक रहे थे.
You are not marked by gold or war, she said, her voice soft as silk and firm as steel. तुम ना सोने की अलामत रखते हो ना जंग की, उसने कहा. उसकी आवाज रेशम की तरह नरम और फौलाद की तरह मजबूत थी. Why do you follow shadows, scribe? तुम साए के पीछे क्यों चले आए, ए कातब? Naim bowed deeply. Because the world of ink has no breath, no blood. I want to witness something real, something forgotten. Naim ने गहरे झक्कर कहा, क्योंकि स्याही की दुनिया में ना सांस है ना खून. मैं कुछ हकीकी देखना चाहता हूँ, कुछ भूला हुआ. She studied him, her gaze cutting through his soul like a blade through parchment. उसने गौर से देखा, उसकी निगाहों ने उसकी रूह को ऐसे काटा जैसे छरी कागज को. Then ride with us, she said. But know this, everyone who joins the Crimson Winds must offer a truth and carry a lie. तू हमारे साथ सवार हो जा, उसने कहा, लेकिन जान ले, जो भी सरख्वाओं के साथ शामिल होता है, उसे एक सच देना पड़ता है और एक झूठ ले जाना होता है. Naim nodded, unsure of what that meant, but knowing he could not turn back. नाइम ने सर हिलाया, इस मतलब को समझे बगैर, लेकिन जानता था कि वो वापस नहीं जा सकता. The caravan wound through invisible paths known only to the stars. काफिला इन पोशीदा रास्तों से गुजरा जो सिर्फ सितारों को मालूम थे. They passed villages that didn't appear on any map, traded with desert spirits that spoke in riddles, and slept in oases where time stood still. वो इन बस्तियों से गुजरे जो किसी नक्शे पर नहीं थीं, सहरा के जिनों से सूदा किया जो पहेलियों में बात करते थे, और ऐसे नखलिस्तानों में सुए जहां वक्त थम जाता था. Safira never revealed their final destination. We follow the scent of broken pacts, she said cryptically. सफीरा ने कभी भी उनके आखिरी मकाम का इंकिशाफ नहीं किया. हम टूटे हुए वादों की खुशबू के पीछे चलते हैं. इसने पुरस्कार अंदाज में कहा. We collect stories and souls. Both are currencies where we go. हम कहानियां और रूहें जमा करते हैं. दोनों ही वहां करेंसी हैं जहां हम जाते हैं. Naim chronicled everything. The Maples routes, the songs of the Sand People, the ancient ruins that glowed beneath moonlight. नाइम ने सब कुछ कलम बंद किया. बेनक्शा रास्ते, रीत के लोगों के गीत, कदीम खंडरात जो चांदनी में चमकते थे. But the more he wrote, the stranger his memories became. लेकिन जितना वो लिखता गया, इसकी यादें इतनी ही अजीब होती गईं. He began to dream of things he had never lived. A city swallowed by red mist, a lover with obsidian eyes, a child whose shadow was missing. इसने इन चीज़ों के ख्वाब देखने शुरू किए जो इसने कभी नहीं झीले थे. एक शहर जो सर्ख धंध में निगल लिया गया, एक महबूबा जिसकी आंखें सियाह पत्थर जैसी थीं, एक बच्चा जिसका साया गायब था. He asked Safira about his dreams. इसने सफीरा से अपने ख्वाबों के बारे में पूछा. They are not yours, she replied. They belong to the caravan. We carry what others cannot. ये तुम्हारे नहीं हैं, उसने जवाब दिया. ये काफले की हैं. हम वो चीज़ें उठाते हैं जो दूसरों से नहीं उठते. One night, deep in the rubied wastes, they reached a forgotten ziggurat, guarded by statues of beasts with human eyes. एक रात गहरे सरख सहराओं में वो एक भूली हुई ज़िगुरात तक पहुंचे जिसकी हिफाजत इंसानी आंखों वाले जानवरों के मुजस्मे कर रहे थे. Safira dismounted and handed Naim a scroll sealed with black wax. Safira ऊंट से अतरी और नाइम को एक स्याह मोम से बंद तो मार दिया. This is your lie, she said. Deliver it to the vault at the top. ये तुम्हारा झूठ है, इसने कहा. उसे ऊपर वाले खजाने में पहुंचा दो. What's inside? He asked. इसमें क्या है? उसने पूछा. Your past, she whispered. And perhaps your price. तुम्हारा माजी? उसने सरगोशी की. और शायद तुम्हारी कीमत. With trembling fingers, Naim climbed the weathered steps. कांपती इंगलियों के साथ नईम पुराने जीनों पर चढ़ गया. At the top, he found a stone door that opened without a touch. ऊपर इसे एक पत्थर का दरवाजा मिला जो बगैर छुए ही खुल गया. Inside lay a chamber of mirrors, each reflecting a different version of him. One a warrior, one a king, one a beggar, one with no face at all. अंदर एक आईनों का कमरा था,
हर आईना इसकी एक मुख्तलिफ शक्ल दिखा रहा था, एक सिपाही, एक बादशाह, एक फकीर और एक जिसका चेहरा ही नहीं था. He placed the scroll on a pedestal. The mirrors shattered. इसने तुमार एक सतून पर रखा. आईने चिकनाचूर हो गए. In their shards, he saw the truth he had never dared to admit. He was not seeking meaning, but escape. Not adventure, but forgetting. इनके टकरों में इसने वो सच देखा जिसे मानने की कभी हिम्मत नहीं की थी. वो मानी नहीं, फरार चाहता था. महम नहीं, भूल जाना. When he returned, Safira had aged 100 years, or so it seemed. जब वो वापस आया, सफीरा 100 साल बूढ़ी लग रही थी. या कम अज कम ऐसा महसूस हुआ. Her hair was white as bone, her eyes dull with exhaustion. उसके बाल हड्डी की तरह सफ़ेद थे और आंखें थकन से मुधम थीं. You've paid, she said, and earned your passage. तुमने कीमत अदा कर दी है, उसने कहा, और अपना रास्ता हासिल कर लिया है. Where are we going now? नईम asked. अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब नाइम ने पूछा. She smiled faintly. To the Crimson Vault, where memory burns and names are unspoken. There, you may choose who you become. उसने मुद्हम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सरख खजाने की तरफ, जहाँ याददाश्त जलती है और नाम खामोश होते हैं, वहाँ तुम चुन सकते हो कि तुम कौन बनोगे. And so they rode on into lands where maps dissolved, where even the stars bowed in reverence. और यूं वो ऐसे इलाकों की तरफ रवाना हुए, जहाँ नक्शे मिट जाते हैं, जहाँ यहाँ तक कि सितारे भी ताज़ीम से झुक जाते हैं. Neem's scrolls remained blank from that night onward, not because he stopped writing, but because some stories must live only in the wind. इस रात के बाद नाइम के तुमार खाली रहे, ना इसलिए कि इसने लिखना छोड़ दिया, बल्कि इसलिए कि कुछ कहानियाँ सिर्फ हुआ में ही जिंदा रहती हैं. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the golden dunes beyond the city of Zarishan, where the wind carved ancient secrets into the sand, there existed a caravan that traveled only beneath the light of the crescent moon. It was called the Caravan of Crimson Winds, a procession of veiled riders, crimson banners, and camel-borne treasures that shimmered like stars under starlit skies. Legends whispered that the caravan was led by a woman named Safira, whose eyes held the sorrow of centuries and whose voice could tame the desert itself. She was neither queen nor slave, but something far older, a keeper of debts never paid and promises never broken. One twilight, a young scribe named Naim, weary of ink-stained parchment and courtly lies, overheard a drunken merchant mumble about the caravan passing through the Valley of Salt within 3 nights. Naim, longing for meaning and danger, packed his scrolls, tied his fate to the wind, and set off toward the valley. The journey was perilous. He crossed cracked earth that bled fire at dusk, wandered through abandoned temples where shadows murmured forgotten prayers, and fought sleep beneath a sky of blistering stars. But when the 3rd night arrived, and the moon hung like a sliver of glass, he saw them. Riders cloaked in scarlet silk, camels draped in rubies, drums echoing the rhythm of vanished civilizations. Safira saw him too. She halted the caravan with a single lifted hand and beckoned Naim forward. "Why does ink call to sand, little scribe?" she asked. Naim bowed, heart pounding. "Because stories deserve to be written by those who seek them." She smiled, softly, as one does at a child who asks to play with fire. "Then come, but know this. The stories we carry are paid with memory, not gold." And so began Naim's journey across kingdoms never charted on any map. They passed through the oasis of cracked mirrors, where travelers faced visions of their greatest regrets. They camped beneath the Spire of Bone, a tower said to be built from the remains of forgotten kings. In each place, Naim recorded tales that defied belief, a city that floated in the sky but demanded a soul for passage, a well that whispered prophecies in exchange for tears, a lion that spoke only in riddles. But the deeper into the desert they traveled, the more Naim noticed something strange. Each night, one member of the caravan vanished. First a merchant, then a guard, then a camel. Safira never spoke of it, and the remaining members never wept. When Naim asked, she only replied, "Everything has a cost, and some debts are paid in shadows." On the 21st night,
Naim awoke to find his name etched into the sand beside his tent, surrounded by symbols he did not understand. He confronted Saphira, trembling. Am I next? She nodded solemnly. You asked to follow the story to its end. Most never do. Terrified yet resolute, Naim begged for a way to survive. Saphira placed a single scroll in his hands, sealed with black wax and heavier than it should be. Return to Zarishan. Read this only when you've forgotten what the stars look like in the desert. Then the caravan rode into a crimson wind and disappeared forever. Years passed. Naim became the royal historian of Zarishan, his eyes always distant, his parchments filled with tales the court called myths. Yet each night he looked toward the dunes, half expecting red silk to ripple across the horizon. On his final night, as an old man with trembling fingers, he opened the scroll. Inside he found not words, but a map inked in silver, showing the path to a place that didn't exist. A place the wind still whispered. Naim approached cautiously, his heart thundering like the hooves of wild horses. As he drew near, the air changed, thicker, fragrant with myrrh and wind-borne spices. Saphira sat atop a tall, black camel adorned with silver tassels and blue beads that glinted like tears. You are not marked by gold or war, she said, her voice soft as silk and firm as steel. Why do you follow shadows, scribe? Naim bowed deeply. Because the world of ink has no breath, no blood. I want to witness something real, something forgotten. She studied him, her gaze cutting through his soul like a blade through parchment. Then ride with us, she said. But know this. Everyone who joins the Crimson Winds must offer a truth and carry a lie. Naim nodded, unsure of what that meant, but knowing he could not turn back. The caravan wound through invisible paths known only to the stars. They passed villages that didn't appear on any map, traded with desert spirits that spoke in riddles, and slept in oases where time stood still. Saphira never revealed their final destination. We follow the scent of broken pacts, she said cryptically. We collect stories and souls. Both are currencies where we go. Naim chronicled everything. The Maple's roots, the songs of the Sand People, the ancient ruins that glowed beneath moonlight. But the more he wrote, the stranger his memories became. He began to dream of things he had never lived. A city swallowed by red mist, a lover with obsidian eyes, a child whose shadow was missing. He asked Saphira about his dreams. They are not yours, she replied. They belong to the caravan. We carry what others cannot. One night, deep in the rubied wastes, they reached a forgotten ziggurat guarded by statues of beasts with human eyes. Saphira dismounted and handed Naim a scroll sealed with black wax. This is your lie, she said. Deliver it to the vault at the top. What's inside? He asked. Your past, she whispered. And perhaps your price. With trembling fingers, Naim climbed the weathered steps. At the top, he found a stone door that opened without a touch. Inside lay a chamber of mirrors, each reflecting a different version of him. One a warrior, one a king, one a beggar, one with no face at all. He placed the scroll on a pedestal. The mirrors shattered. In their shards, he saw the truth he had never dared to admit. He was not seeking meaning, but escape. Not adventure, but forgetting. When he returned, Saphira had aged 100 years, or so it seemed. Her hair was white as bone, her eyes dull with exhaustion. You've paid, she said, and earned your passage. Where are we going now? Naim asked. She smiled faintly. To the Crimson Vault, where memory burns and names are unspoken. There you may choose who you become. And so they rode on, into lands where maps dissolved, where even the stars bowed in reverence. Naim's scrolls remained blank from that night onward, not because he stopped writing, but because some stories must live only in the wind. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आप हमारे साथ अब तक रहने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।